The Prime Minister is spending Diwali with our soldiers. He's in Nowshera sector of Jammu and Kashmir along the line of control, keeping up with his practice and his tradition of spending the festival with army personnel. This time too, Prime Minister Modi met with soldiers. Prime Minister also was seen paying tribute to soldiers who lost their lives in the line of duty. In fact, while addressing the soldiers, the Prime Minister told them that our forces are his family. The Prime Minister also hailed India's effort to strengthen its defence infrastructure and said that now 65% of the defence budget was spent within the nation. Prime Minister Modi also said that India has to adapt the military capabilities in line with changing world structures and the mode of war. He said also that earlier it used to take years together to procure defence equipment for security forces, but today India stands prepared and ready with the vision of Atmanirbhar Bharat. Prime Minister Modi also hailed India's Nari Shakti initiative and said that now all military colleges are open in fact for women. He also in fact spoke about the surgical strikes, remembering how it was a tense moment for him and how our soldiers did the country proud. मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई, वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है, माना जाता है, और मैं मानता हूं ये अपने आप में बड़ी प्रेरणा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप को यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। Let's take this across now to Sunilji Bhatt, who's joining us live from Nowshera and Rajouri. Sunilji, we just played out some of the highlights of what the Prime Minister had to tell all the soldiers who'd gathered there. Not just speaking about how he believes our soldiers are his family, the Prime Minister, made very important points about how we need to focus on, developing our defense mechanisms. He's also spoken about women entering the armed forces and importantly mentions also what happened during the surgical strikes. Absolutely, Akshita. Prime Minister Narendra Modi in his address to the army jawans touched upon many important issues, and he spoke about women empowerment, and he also said that the nation is proud of the armed forces, their sacrifices. He recalled the contribution of the Nowshera Brigade during the surgical strikes. He said that it was because of the valiant efforts of the Nowshera Brigade that we were able to inflict heavy damage on the enemy during the surgical strikes. And Takshita, I just want to give one update that the Prime Minister's chopper has taken off from the Nowshera helipad and he is now going to Jammu airport, and from there he will return to New Delhi. But
very important things which have been said by Prime Minister Narendra Modi in his address to the army jawans. It was a moral booster for the jawans here at the Naushera Brigade. He said that it was because of the sacrifices which are being made by the army jawans that nation was able to celebrate festivals like Deepavali. He said that that everyone wants to be with their families during the festival of Deepavali, but these army jawans are sacrificing their happiness, their joy, and he tried to strike a personal chord with the army jawans. He said that he himself is also part of their family. So it was a moral booster for the army jawans, a big moment for these army jawans who are serving the nation, who are serving Mother India, who are deployed here at the line of control. They are working here under very difficult circumstances. Enemy is always looking for an opportunity to create mayhem, to inflict damage. Right. But our brave jawans who are posted here, who are deployed here, are always maintaining strict vigil, and they have foiled nefarious designs of the enemy many times. And That's right. Akshita, one important thing which Prime Minister Narendra Modi talked about was the contribution of Brigadier Usman, who is known as the Lion of Naushera. During the 1947-48 war, because of his efforts, enemy was not able to capture Naushera. So he played an important role. Brigadier Usman, Prime Minister Modi talked about his role, his contribution. And before meeting the army jawans, Prime Minister Narendra Modi directly went to the Martyrs Memorial inside the Naushera Brigade. He laid a wreath on the Martyrs Memorial and paid tributes to them. So it was a big moment for the army jawans here at the Naushera Brigade. Prime Minister Narendra Modi himself came and spent some quality time with them. He distributed sweets to them and said that he was part of their family. He was like one of their family members. So Prime Minister Narendra Modi once again spent Diwali with the army jawans. It has now become a tradition since he became the Prime Minister. It's a big message really to our forces, Sunilji. You can only imagine how our soldiers also would be feeling missing home right now, away from home for Diwali. And the Prime Minister making this a practice essentially to serve a reminder to our forces that we as a nation are grateful to them. Sunilji, thank you very much for joining us. But as I mentioned, this is essentially a tradition, a Diwali tradition for the Prime Minister. Since 2014, he's been spending every Diwali with jawans who are deployed in forward areas across our borders. Here's a look back on how the Prime Minister has been spending his Diwalis in the recent past. 2014, in his very first year in office, Narendra Modi decided that his Diwali would be among soldiers guarding India's borders. That year, he made a surprise visit to the Siachen base camp, the world's highest battlefield, to celebrate the festival with jawans posted in the harshest conditions. देश के लोग आनंद और उत्साह के साथ दिवाली मना सके, इसलिए ऐसी दुर्गम परिस्थिति में अपने आप को खपा रहे हैं. Seeing the joy of jawans that a Prime Minister was visiting them on Diwali led to Modi making it a tradition. In 2015, donning an army cap, Prime Minister Modi spent Diwali at the Dograi War Memorial in Amritsar, a shrine to one of India's greatest military victory in the 1965 Indo-Pak War. भारत की सेना, भारत के सैनिकों का चरित्र, भारत के वीरों का साहस, हमारी शिस्त, हमारा शौर्य, हमारा समर्पण, हमारे सपने, पूरा विश्व इसके लिए हमें बहुत आदर के साथ देखता है. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. The next year, Modi celebrated the Festival of Lights with braves from the Indo-Tibetan Border Police, the Dogra Scouts and the army at Himachal Pradesh's Sumdo,
along the China border. The Prime Minister expressed gratitude to the soldiers. मेरा भी मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाऊं और जो अपने हैं उनके बीच आया हूं और इसीलिए हंसते खेलते हुए दिवाली मनाने आया हूं। It was 2017. Tensions between India and Pakistan were high following repeated ceasefire violations. Clad in an army jacket, Modi spent his Diwali among BSF troops in the Gurez Valley along the line of control. जब मैं आप लोगों से हाथ मिलाता हूं तो आपको लगता होगा कि ये कोई फॉर्मेलिटी है। मिलाना पड़ता है। मेरे लिए फॉर्मेलिटी नहीं है। मुझे एकदम से ऊर्जा मिलती है आपसे हाथ मिलाता हूं। In 2018, he spent his Diwali with jawans of the Indian Army and ITBP in Harsil, Uttarakhand. आप यहां रहकर के सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ये सिर्फ धरती के किसी हिस्से की सुरक्षा नहीं, ये 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा है। ये 125 करोड़ देशवासियों के सपनों की सुरक्षा है। ये 125 करोड़ देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी तपस्या है। Months after an astounding victory in Lok Sabha for the second time, Prime Minister Modi marked his Diwali celebrations with jawans in the Rajouri sector of Jammu and Kashmir. कि मैं भी दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं और इसीलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवारजनों के बीच आया हूं। आप ही मेरा परिवार है। The Diwali celebrations in Jaisalmer during the pandemic was a special one as the Prime Minister rode atop an Arjun tank during his visit to the Longewala post. Modi's date with jawans every Diwali is not only a huge morale booster for the men on the frontier, but also a gesture that the Prime Minister is with them on a day when they miss their families and home the most. Bureau Report, India Today. भारत माता की। So after spending Diwali with our soldiers, tomorrow Prime Minister Narendra Modi is going to be visiting Kedarnath. And Kedarnath holds a very special place in his heart. So every time Narendra Modi makes a pilgrimage to the holy site, there's no effort spared to improve the Kedarnath Dham for devotees, especially after the devastation back in 2013. Each of Prime Minister Modi's visits have been unique. If the last time he spent a solitary night in a cave, then this time he is there a day after Diwali to oversee, inaugurate and launch a slew of new development projects worth 400 crore rupees that are taking place at the Kedarnath Dham. Kedarpuri is getting all digged up. The Prime Minister is coming. प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्षों में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इस केदारपुरी में किया है। आप देखेंगे कितना चौड़ा कॉरिडोर जहां हजारों लोग खड़े हो सकते हैं। शंकराचार्य भगवान की प्रतिमा का अनावरण होना है। आप देखेंगे उधर सारे पंडों के सारे मकानों का पुनः निर्माण हो रहा है। आप देखेंगे आस्था पथ अलग से तैयार हो रहा है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा जो उनकी एक आस्था थी, जो उनका एक भगवान केदार के प्रति लगाव था, वो सारा यहाँ नजर आ रहा है। Prime Minister Modi will be offering prayers at the Kedarnath temple. He will inaugurate the Samadhi of Sri Adi Shankaracharya that was damaged in the 2013 deluge.
He will also unveil a statue of the Shankaracharya. ये जो आदि शंकराचार्य जी की यहाँ पर समाधि थी और एक धर्मदंड वहाँ पर एक स्थापित किया गया था, क्योंकि आपदा के समय वो क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई, जिसका वजन 28 टन है। और ये मैसूर के पास ये इस प्रतिमा को बनाया गया है और बहुत जीवंत है। कृष्ण शिला जो ग्रेनाइट जैसी मजबूत होती है, और एक दक्षिण की जैसी परंपरा है कि वहाँ पर जो प्रतिमाएं बनती हैं वो इसी कृष्ण शिला से बनती हैं। तो उसी कृष्ण शिला से इस प्रतिमा को बनाया गया है आदि गुरु शंकराचार्य जी की, जो लगभग 12 फुट ऊंची है और 28 टन इसका वेट है। It is stunning. They have captured the equanimity of Adi Shankara and also the strength of Adi Shankara. He travelled across India 4 times before he died at the age of 32. So most statues just keep only his calmness, but this brings both elements of it, and it's really beautiful. शुरू में हमने रामबाड़ा से केदारनाथ तक रास्ते का निर्माण किया है। उसके बाद केदारनाथ में 2 हेलीपैड और लिंचौली में 1 हेलीपैड का निर्माण किया है, और केदारनाथ में 40 तीर्थ पुरोहितों के घरों का निर्माण किया गया है, और यहाँ पर 3 पुल हमने बनाए हैं, और जो मंदिर के सामने जो रास्ता है उसका निर्माण किया गया है, और सरस्वती नदी की तरफ यहाँ पर रास्ते का निर्माण किया गया है, और अभी मंदाकिनी नदी की तरफ रास्ते का निर्माण चल रहा है और घाटों का निर्माण चल रहा है। Prime Minister Modi will lay the foundation stone for multiple projects worth over 180 crore rupees. These include the redevelopment of Sangam Ghat, First Aid and Tourist Facilitation Center, Admin Office and Hospital, 2 guest houses, Police Station, Command and Control Center, Mandakini Asthapat, Queue Management, and Rain Shelter, and Saraswati Civic Amenity Building. The Prime Minister will also review and inspect the work already done and are still in process along the Saraswati Astha Path. There are few other projects that the Prime Minister is scheduled to inaugurate. In the list are key infrastructure projects which have been completed, like the Saraswati Retaining Wall Astha Path and Ghats, Mandakini Retaining Wall Astha Path, Tirth Purohit Houses and Garud Chatti Bridge on River Mandakini. जो 2013 के बाद यहाँ पे पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे पहले से बहुत ही अच्छा जो व्यवस्था है यहाँ पे दिखाई दे रही है, और सभी यात्रु यहाँ पर आकर बहुत ही प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं। देखिए, मैं लगातार 2011 से यहाँ पे बाबा केदार की यात्रा कर रहा हूँ। 2013 में जो आपदा आई थी उसके 1-2 साल तक काफ़ी तहस नहस यहाँ पे हो गया था, लोगों का रोज़गार छिन गया था, लेकिन आज के समय में लोगों को काफ़ी अच्छा रोज़गार यहाँ पे मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे कार्य जो हो रहा है शासन प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। प्रोटोकॉल के अनुसार और सिक्योरिटी मेजर्स के अनुसार सारी तैयारियाँ, बैरिकेडिंग इत्यादि इत्यादि सब करी जा रही है। The BJP has invited sadhus and devotees to be part of the nationwide celebrations on 5th November to be held at 4 dhams, 12 Jyotirlings and 86 prominent temples established across the country by Adi Shankaracharya during his travels. माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद इसको पुनर्जीवित करने का काम किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने। तब से लेकर अब तक ये मंदिर यूं ही यहाँ पर डटा है, खड़ा है, और दूर दूर से भक्तजन यहाँ पर आते हैं। लेकिन 2013 उस साल की आई प्राकृतिक आपदा ने यहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर दिया था, सब कुछ बिखर सा गया था। लेकिन एक बार फिर से मूर्त रूप में यह हिस्सा कर रहा है बाबा भोले के भक्तों का स्वागत, और पूरी तरह से इसकी रौनक भी इस मंदिर की भव्यता और यहाँ की शालीनता, इसकी कुशलता को देखकर आप समझ सकते हैं। And that's all we have time for in this broadcast. Thank you for tuning in. Hope you're having a very happy and great Diwali. For all the latest news and updates that we're tracking today, you can log on to our website indiatoday.in. You can also download the India Today app.